Hi, good afternoon, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we will be discussing the questions from Theory of Computation. तो आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो अगस्त 2024 में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पूछे गए थे. सो लेट्स क्विक स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. That is, here you are given with some steps. You have to arrange the stages of a Turing machine operation in the correct order as they occur due to computation. तो किस तरीके से किस ऑर्डर में आपके पास डिफरेंट स्टेजेस आती हैं इन द ट्यूरिंग मशीन, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू अरेंज. तो यहाँ पे आपको कुछ 5 स्टेटमेंट्स दी गई थी. स्टेटमेंट ए में बोल रहे हैं राइटिंग अ सिंबल ऑन द टेप, moving the tape towards the left and the right, reading a symbol from the tape, transition to a new state, halting, and accepting or rejecting the input. तो definitely halting और accepting और rejecting तो बिल्कुल last step होगा, तो सबसे end पे E आएगा. So that is fixed. Now let's focus here. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको input tape से symbol को read करना है, and on the basis of that it will be making a transition. कोई भी machine है, finite automata है, so first of all that is going to read a symbol and then it's making a transition. So reading a symbol from the tape will be step 1. Then on the basis of that, it will be making a transition to a new state based on the current state. Current state और input symbol जो आपने read किए हैं, उसके basis पर कुछ transitioning होगी. 2, यानी कि सबसे पहले C आएगा, then we are getting D. So on the basis of this, we can eliminate option 1 and 2. ट्रांजिशन करने के बाद आपने नई स्टेट पे गए, देन इट इज गोइंग टू रीड और इट इज गोइंग टू राइट और मॉडिफाई द टेप कंटेंट. कई बार क्या होता है कि जैसे आप ट्रांसड्यूसर्स को इम्प्लीमेंट करते हो और यू वांट टू फाइंड आउट वंस कॉम्प्लीमेंट, सो इट इज गोइंग टू अपडेट द टेप कंटेंट, राइटिंग अ सिंबल ऑन द टेप. टेप पर राइट किया, सो दिस इज third step. And after that we are going to move the tape header towards the left or the right side, because tape header in the Turing machine can move in both the directions. दोनों directions में जा सकते हैं, and finally it is going to halt. तो सबसे पहले आया आपके पास C D A, C D A B E, that is nothing but it is option 3. So correct answer for this question is option 3. ये सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? I hope this is clear. Okay, so let's move on to the next question. Just read the problem statement. तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. आपको कुछ लैंग्वेजेस गिवन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ देम इज रिप्रेजेंटिंग द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. सो ऑप्शन ए, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में हमें मालूम है that if the language is infinite, अगर हमारे पास language infinite है, or first of all let's say that comparisons are even possible for the regular languages as well. So if there is a comparison required, कहीं पे आपके पास comparison आ रहा है but the language is finite, comparison है but the language is finite, तो हम क्या बोलेंगे, that is the regular language. ठीक है जी. बट अगर आपके पास लैंग्वेज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से बड़ी होगी वैल्यू बट मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, दैट इज नॉट गिवन. सो दैट दिस इज नोन एज इनफाइनाइट. अगर कंपैरिजन रिक्वायर्ड है, कंपैरिजन मीन्स मेमोरी इज रिक्वायर्ड, memory is required, and
the language is infinite, तो आपके पास हमें check करना पड़ेगा whether that is CFL or CSL, तो हम बोलेंगे language is not regular. अब CFL और CSL के केस में हमें ये मालूम है CFL supports finite automata, CFL के केस में आपके पास finite automata आता है plus one comparison. अगर एक comparison है then the language is CFL, because here in order to support one comparison there is one data structure used जो हम stack use करते हैं. So one stack is used. So that means one comparison can be supported. अब यहाँ पे option A में देखते हैं. It is saying that I plus K should be equal to J plus L. I कितने होंगे, K कितने होंगे, इसका कंपैरिजन आपको नहीं दिया गया है. So we can simply say that it is I plus K is equal to J plus L. यानी कि I आ रहा है, push it into the stack, J आ रहा है, pop out the elements, K आ रहा है, push it into the stack, L आ रहा है, pop out from the stack. तो single stack is sufficient to implement this. So this means this language is context free. I is equal to J, मैंने एक stack लिया. In the stack when I'm getting W, I is equal to J का मतलब क्या है, number of W's should be equal to number of X. So जैसे मेरे पास W आ रहा है, I'll push it into the stack. जैसे ही X आने शुरू होंगे, I'll pop it out. So in the same stack, यहाँ पे obviously order of letters matters. Letters का order matter करता है. जैसे ही आपके पास Y आया, then it is replaced with Z because K is equal to L. So this means that single stack के साथ आप implement कर सकते हो. So even this is also CFL. I is equal to J is equal to K. That means number of W's should be equal to number of X and number of X should be equal to number of K's. So this means that more than one comparison is required. So two comparisons are required. अगर दो comparisons आ गए तो ये आपके पास CFL नहीं हो सकता. C is not the CFL. A and B although सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. A and B तो श्योरली CFL है ही है. A और कहीं पे नहीं आ रहा. So only on the basis of A you could have returned the answer. Here I is equal to J, number of W should be equal to number of X और साथ में क्या बोले, it should be equal to K plus L. So again two comparisons are taking place. So this is not CFL. Two comparisons are taking place. So this is not CFL. ये क्लियर है? एक बार फटाफट से इसको देखिए and just give me the confirmation. Okay. Now let's move on to the next question. Before that, I have one announcement for you, and towards the end of this session, I'll be discussing one more important announcement. So here we have the foundation batch coming soon for UGC NET June 2025 aspirants. सो जो लोग पेपर वन और पेपर टू की तैयारी डिटेल में करना चाहते हैं एंड टारगेटिंग ऑन राइटिंग द जून 2025 पेपर, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है जो मैं सेशन के एंड में डिस्कस करूंगी. So before moving on to that or before that announcement, let's solve few more questions. So here is the question. Just try it.
Anyone got the answer? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? कंसिडर द ग्रामर, आपको एक ग्रामर दी गई है एंड हियर वी आर गिवन विद थ्री टर्मिनल्स x, y एंड z. T, Q, R, S are the non-terminals. आपके पास यहाँ पे कुछ non-terminals है. What will be the follow of the set of the non-terminal R? I hope that the screen is visible. तो यहाँ पे हमें क्या find out करना है? We want to return here the follow. So follow of the non-terminal R. Follow of R. Follow of R क्या होगा? आप ग्रामर में देखिए, R is here. So R के बाद क्या है? Whatever is the equation, उसके बेसिस पर हम फर्स्ट फाइंड करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू रिटर्न फर्स्ट ऑफ एस. फर्स्ट ऑफ एस में आपके पास टर्मिनल आया z and we are getting epsilon. Epsilon is not possible क्योंकि अगर मैं यहाँ पे first of s में यहाँ epsilon रखूंगी, this is going to return nothing. यानी कि r के बाद कुछ नहीं आ रहा, तो ये क्या find out करेगा? Follow of q. So इस null को मैं replace कर सकती हूँ. Instead of this, we are going to get follow of q. अब follow of q में देखिए क्या आ रहा है? q के बाद क्या आ रहा है? We are getting the terminal x. So this is returning x. तो इसका मतलब follow of r is nothing but z and x. Z and x, so that is nothing but it is option 3. So correct answer for this question is option 3. I hope that it's clear. So here is the next question. So here we are given with the steps. आपको यहाँ पे कुछ task दिए गए हैं. They are asking that which of the following tasks could be attained using the syntax tree in compiler design. Compiler design में किस तरीके से आपके पास कौन-कौन से steps perform होते हैं?
So what steps can be achieved here in using the syntax tree? क्या सिंटेक्स ट्री के साथ आप टाइप चेकिंग करते हो? एग्जैक्टली यस, क्योंकि जब आपके पास सिमेंटिक एनालिसिस होता है वहां पे हम मॉडिफाइड सिंटेक्स ट्री जनरेट करते हैं फॉर द टाइप चेकिंग. So statement A is true. So on the basis of this, we can eliminate the option B. आफ्टर दैट कोड जनरेशन, सिंटेक्स ट्री के साथ कोड जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं. कोड ऑप्टिमाइजेशन, वी कंस्ट्रक्टेड द डायरेक्टेड acyclic graph, so it is also attained, so C is also correct. And error handling cannot be done by the syntax tree, so this is incorrect. So we can say that the correct answer for this question is its option 1, that is A, B and C only. Pretty straightforward question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं which of the following languages can be recognized by the push down automata but cannot be recognized by the deterministic finite automata. अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि पुश डाउन ऑटोमेटा और डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस है. इन द पुश डाउन ऑटोमेटा, along with the memory, this is using one stack for comparison. Comparisons are possible, but deterministic finite automata के केस में आपके पास सिर्फ पैटर्न मैचिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the string should start with the letter A, string should end with, or it should contain the substring, और length के ऊपर हो गया even length आएगी, odd length आएगी, mod 3 करके remainder should be 1. So something like this is recognized by deterministic finite automata. But हमें कुछ ऐसी languages बतानी है जो push down automata accept करते हैं, but it cannot be recognized by the deterministic finite automata. Deterministic finite automata, infinite languages जिसमें comparison हो रहे, that is not supporting. For example, फर्स्ट केस में आपको क्या बोला है, दिस इज कंटेनिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इवन, सो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डीएफए. हम इसके लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एंड वी नो दैट इवन नंबर मींस डिवाइड बाय 2 करके आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, इट विल बी हैविंग द रिमाइंडर 2. सो दैट मींस डीएफए के अंदर दो स्टेट्स बनेंगी, ऑड लेंथ, definitely two states. DFA can be constructed. All the zeros should come before all the ones. So 0 star, 1 star. So for this also you can construct the DFA. Number of zeros कितने होंगे, number of ones कितने होंगे, ऐसा कोई comparison नहीं आ रहा. So definitely it is true. W contains an equal number of zeros and equal number of ones. अब यहाँ पे कंपैरिजन की जरूरत पड़ रही है. कंपैरिजन मींस अगर 0 आ रहे हैं आप स्टैक के अंदर पुश करवा दीजिए, 1 आ रहे हैं देन पॉप इट आउट फ्रॉम द स्टैक. तो नंबर ऑफ जीरोस, अगर आपके पास एंड पे एम्प्टी स्टैक आता है और स्ट्रिंग खाली हो चुका, तो डेफिनेटली जो आपके पास एलिमेंट्स है दोज आर equal. Number of A's and number of zeros and number of ones are equal. So comparison is required. तो इसके लिए this is the infinite language. One comparison is required. This means that for this we can construct the PDA, but not DFA. So even they are saying that कि ऐसे कौन सी लैंग्वेज है जो पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं बट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डीएफए. तो D is one of them. So A and B is already eliminated. E देखते हैं. E के केस में क्या बोला है, all the ones comes before zeros. कितने zeros होंगे और कितने ones होंगे, ऐसा कोई कंपैरिजन आपको नहीं दिए. So this is simply saying that all the ones should come before. कितने ones आएंगे, any number of ones can occur before 0. So this means that for this also you can construct DFA. So correct answer for this question is D only. Correct? So now let's move on to the next question. Now we are given with two languages, L1 and L2 are context-free languages. Which of the following is true about L1 intersection L2? हमें ये मालूम है कि intersections context-free languages are not closed under intersection, तो definitely आपके पास ये context-free नहीं है. Neither it can be regular, because अगर दो languages context-free हैं, हो सकता है कि infinite language हो and comparison is
there, so it may not be returning the context free. L1 के अंदर मान लीजिए मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, number of A's should be equal to number of B's. L2 is saying that number of C should be equal to number of B. तो अब यहाँ पे आपके पास जो L1 intersection L2 आएगा, तो that will be the next higher language. So that is coming out to be recursively enumerable. So correct answer for this question is recursively enumerable. That is option 3 was the correct answer. So this is all about this session. So इस session में मैंने theory of computation के questions लिए from the paper August 2024. इससे पहले हम algorithms, data structures, DBMS, Unit 2, computer organization and architecture, and digital. Uh, ये सारे questions operating system. So we have covered these units. Now in the next section onwards, we will be discussing the questions which were asked in June 2024. Although जो June 24 वाले questions थे, उनका level was good as compared to the level of the questions which were asked in August 2024. August 2024 में आपने देखा बहुत simple questions आए हुए थे, but unfortunately June वाला paper cancel हुआ था. But at least we can discuss the solution of the questions which were asked in which were asked in June 2024. मैम ये क्लास क्या नेट JRF की है? बिल्कुल राहुल. This is the class for UGC NET JRF and paper 2 we are talking about theory of computation. तो ये यूनिट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस में. तो अगर आप JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ यू वांट टू राइट द पेपर फॉर कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस, तो डेफिनेटली आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. So next we have the announcement, क्योंकि इतने ही questions थे जो हमें cover करने थे, and today also we'll be having the master class. In the master class we will be discussing a few more questions, practice questions from computer networks. So we have launched the foundation batch for June 2025, जिसके अंदर आपके पास paper 1 और paper 2 की complete preparation होगी live classes के अंदर. एंड द बेस्ट थिंग इज आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है. अभी करंटली हम कुछ टाइम पहले हमारी छठ से रिलेटेड सेल चल रही थी. नाउ वी आर कंडक्टिंग द स्कॉलरशिप टेस्ट. तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए. सो यूजीसी नेट सिलेक्शन स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड आपके मार्क्स के बेसिस पर यू कैन गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप ऑन यूजीसी नेट और सेट सुपर कोचिंग. पेपर कब होगा? दिस इज ऑन 17th of November 2024. पेपर 8 AM से 12 और 11:59 PM तक होगा. ड्यूरेशन 16 आवर्स का है. आप कभी भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द स्कॉलरशिप टेस्ट. सो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन है बट आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है, यू कैन रिवाइज इट. And currently we are also having the classes and the booster जो revision batch है हमारा. फाउंडेशन के साथ साथ आपकी रिवीजन भी करवाई जाती है, क्योंकि we want कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक निकले. सो बूस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड द बूस्टर क्लास टाइमिंग इज 7 PM. I'll discuss the timings of all the classes. This is the timing for paper 2. Anyone having any doubt? So YouTube की classes UGC NET JRF by Testbook platform पर होती है. We have these classes on the alternate days. Week में 3 दिन होती हैं. At 1 PM we have the classes on YouTube platform. So इस week में हम और questions करेंगे. Next week onwards I'll be discussing the important concepts. So बहुत बार होता है कि कई बार जो हम important concepts में करते हैं उसी में से questions आ जाते हैं. So at 3 PM we have the master class. Important concepts and important questions will be covering in these sessions, master class. Almost 30 minutes की class रहती है. This is for master class. Master class textbook app पर होती है, but these classes are free. So I have discussed the schedule of the free classes, and this is the structure for paper 2. मैं सिर्फ
पेपर 2 की क्लासेस का टाइम डिस्कस कर रही हूँ. वी हैव दीज क्लासेस ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे. आज क्लास इसलिए हुई है बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ऑन मंडे, तो मैंने क्लास कैंसिल ना करके आज क्लास ले लिए. तो जो लोग बाय एनी चांस लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए, दे कैन फॉलो द रिकॉर्डेड सेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फाउंडेशन बैच के अंदर डेली वी आर हैविंग द क्लास इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग. Except for Saturday and Sunday, we have the classes from 10 a.m. to 12 noon. सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक क्लास होती है. 2 आवर्स की क्लास होती है. एंड अदर क्लास इज एट 4 p.m. शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये क्लास टेस्ट बुक ऐप पर होती है. डेफिनेटली फाउंडेशन बैचेस आर पेड बैच, बट इसमें आपको ऑफर मिल सकता है. तो स्कॉलरशिप टेस्ट लिखना मत भूलिएगा. एक तो आपको अपना प्रिपरेशन लेवल समझ में आ जाएगा, दूसरी चीज आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप. सो दीज सेशंस वी आर हैविंग ऑन मंडे टू फ्राइडे. एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बूस्टर, जो कि हमारा रिवीजन बैच है, वी आर कवरिंग द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करके बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं. सो इट्स मोर अबाउट द प्रैक्टिस सेशन, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है और किस तरीके से उस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ कंप्लीट रिवीजन. एंड वी हैव दीज सेशंस फ्रॉम 7 p.m. to 8:30 p.m. We have these sessions on Monday, Wednesday, Thursday and Friday. जैसे हमारा फाउंडेशन बैच खत्म हो जाएगा दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, तो हम ये रिवीजन 5 दिन कर देंगे. अभी के लिए वी जस्ट हैव these सेशंस फॉर 4 days a week. तो जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा वैसे वैसे विल इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. मैंने यहाँ पे आपके साथ प्रोमो कोड यूज किया है. सो जैसे ही आपके पास ऑफर आता है व्हेन यू विजिट द वेबसाइट, so they'll ask for the promo code, so you can use this promo code Shefali S to get the discount. And अगर आपका कुछ भी डाउट है related to foundation batch, booster or the upcoming batch, you can always ping on the telegram group, that is Shefali Ma'am Testbook. And apart from that, this the whole information is given in the description box. Just go through it and write your doubts, write your queries, and obviously screen के ऊपर आपके पास एक support number आता है. You can make a call on that number to get your queries resolved. बाकी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एक बार आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर जाके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखिए, आपको क्या क्या मिल रहा है, व्हाट ऑल थिंग्स विल बी अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग. Then only go for the payment, and please make sure कि फोन पेमेंट्स ऑनलाइन इधर उधर नहीं करनी है. जस्ट डू द पेमेंट बाय फॉलोइंग द ऑथेंटिक वे. वो क्या है कि आप जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, सर्च फॉर दैट कोर्स, वहां पे पे नाउ का ऑप्शन आता है. जस्ट क्लिक ऑन दैट. Okay, so this is all about this session. I hope this session was useful. And in the evening, in the afternoon, we will be having the master class at 3 p.m. जिसमें हम कुछ practice questions करेंगे, क्योंकि last session में मैंने computer networks के questions करवाए थे, and many people were like, we want more practice questions on computer networks. So that session will be having today at 3 p.m. Undoubtedly, you need not to pay anything, but सेशंस टेक्स्ट बुक ऐप पर होंगे. ओके, मास्टर क्लासेस जितनी भी होती है वो टेक्स्ट बुक ऐप पर होती हैं, और यूट्यूब सेशंस में हम कॉन्सेप्ट्स करते हैं. अभी क्योंकि मुझे पेपर डिस्कस करना था, इसलिए यूट्यूब और मास्टर दोनों में क्वेश्चंस हो रहे हैं. नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल बी लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ओके, if you like this video, आपके लिए सेशन बेनिफिशियल था, then don't forget to click the like button. अगर आप इस चैनल पर नए हैं, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notifications of the new videos. Share this information with your friends. जितने ज़्यादा लोग scholarship test देंगे, उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा. So share this information that we are going to have the scholarship test on 17th of November. Thank you so much, guys, and please like the video. Thank you. Take care.